Now student, our next question or topic is, what is a parallel plate capacitor? Derive an expression for its capacitance. On which factor does the capacitance of a parallel plate capacitor depends? सो इस ये क्वेश्चन बेस्ड आते हैं जितने भी डेरिवेशंस और आर्टिकल हमने किए हैं। इस आर्टिकल को भी मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सो हेयर व्हाट इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स कैपेसिटेंस, और इसके कैपेसिटेंस के लिए, कैपेसिटेंस मीन्स एबिलिटी टू होल्ड दी चार्ज, यानी इस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी होती है चार्ज को होल्ड करने के लिए, उसके लिए हमें डेरिवेशन प्रूव करना है। एंड ऑन विच फैक्टर्स डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड, और पूछा गया है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैपेसिटेंस जो होता है वो चारों तरफ के मीडियम पर डिपेंड करता है, और कौन सा कंडक्टर या फिर कौन सा इंसुलेटर हमने या कौन सा सब्सटेंस यूज किया है उस पर भी डिपेंड करता है। सो सॉल्यूशन, parallel plate capacitor. First of all, we will discuss about parallel plate capacitor, that what is the parallel plate capacitor. So the simplest and the most widely used capacitor is the parallel plate capacitor. तो सबसे सिंपल और सबसे वाइडली यूज़ किए जाने वाला कैपेसिटर जो होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। अब ये कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है वो हम देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। हमेशा याद रखिएगा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसमें दो पैरेलल प्लेट्स होती है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है एंड दूसरी पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस से सेपरेट रहती हैं। सो this is the figure of parallel plate capacitor having two parallel plate. One plate is positively charged and another is negatively charged. For capacitor we have to connect one plate of the capacitor into ground, और वी कैन से दैट वी हैव टू डू ग्राउंडेड वन प्लेट, यानी एक प्लेट को हमें ग्राउंडेड करना पड़ता है या किया जाता है, क्योंकि तभी वो कैपेसिटर बनता है। तो ये जो साइन है हमारा ये ग्राउंड किया हुआ है। सो दिस सिंबल इज शोइंग दैट वन प्लेट ऑफ a capacitor is grounded and D is the minimum distance between the parallel plate, and AB the name of two plates, and K is a constant, we can say that it is permittivity constant और dielectric constant। हमने बीच में एक dielectric constant रख दिया है जिसे हमने K बोला है। वेक्टर E is electric field and sigma is charge density, because we are giving some positive and negative charge to the capacitor, so there is some charge density which is denoted by sigma. This symbol is known as sigma. So now let capital A area of each plate. Let us consider that the area of each plate is capital A and small d distance between two plates. We are saying that these plates are separated by very small distance which is denoted by small d, and प्लस माइनस सिग्मा वी कैन से दैट चार्ज डेंसिटी प्लस भी हो सकती है एंड माइनस भी हो सकती है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो चार्ज डेंसिटी है प्लस माइनस वो सिग्मा है, एंड चार्ज टोटल चार्ज विच इज़ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, सो इट इज़ डिनोटेड बाय प्लस क्यू और माइनस क्यू. नाउ वी नो दैट चार्ज डेंसिटी. The formula of charge density is charge upon area, which is denoted by sigma is equal to q upon a, where sigma is charge density, q is charge and a is area. Say equation number 1. Now electric field between two plates is. Now we have to calculate that what is the electric field between two plates. So it is denoted by capital E is equal to charge density upon epsilon naught with dielectric constant K.
in mathematically we can say that E is equal to sigma upon K epsilon naught, where sigma is charge density, K is dielectric constant, and epsilon naught is permittivity of air. Now we can write this equation. E is equal to, the value of sigma is Q upon A. So here we can put the value of sigma, which is Q upon A, K as it is, epsilon naught as it is. Say equation number 2. Now potential difference between the plates. Now what will be the potential difference due to this electric field? It is given by V is equal to electric field into distance. So V is potential difference, E is electric field, and D is distance between the plate. Say equation number 3. Now we have the value of E. So putting the value of E in equation number 3 using equation number 2. इक्वेशन नंबर को 2 को यूज़ करके हम थर्ड में पुट कर देंगे. So we have V as it is and E is Q A K epsilon naught. Now putting this value of E in this equation and D as it is. But we know that capacitance of a कैपेसिटर इज़, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, C इज़ इक्वल टू Q अपॉन V. से इक्वेशन नंबर 5. नाउ we know that what is the value of V. V is Q upon K A epsilon naught D. Now we will use this value in equation number 5. Now putting the value of V in equation number 4, we get, not equation number 4, this is equation number 5, sorry. So putting the value of V in this equation using equation number 4, now we will use equation number 4 in this equation. C as it is, capital Q as it is, upon the value of V is Q upon Ka epsilon naught D. So we will use this value of V in equation number 5. So Q and Q is cancel out. Now we will shift this value upper side the equation and we get C is equal to Ka epsilon naught upon D. Hence this is the capacitance of parallel plate capacitor.